Check, check. Good afternoon, everyone. How are you all? Okay, so sorry for late. Okay, एक बार खाली अपने लिए तो तालियां बजा दीजिए. तो क्या है, थोड़ा नींद में से बाहर आ जाएंगे. ओके, खाना खाया सबने? नहीं. तो प्लीज यहाँ से बीच में से उठ के नहीं जाना. Okay, good afternoon everyone. A very warm welcome on this wonderful afternoon. I am Namrata Mehta. Welcome you all for this Global Chem Expo 2024. First of all, I am very thankful to each one of you, our doctors, our clients, our suppliers, and all our industrialists who are taking out their valuable time for this wonderful afternoon. And trust me, you will enjoy this afternoon and get lots and lots of knowledge and of course mutual win-win benefits for all of us. Can we have a huge round of applause for these prestigious personalities? अरे यार, ये वाले क्यों शांत बैठ रहे हो? अपने लिए तालियां बजा दीजिए. Okay. Today we are here
to celebrate our past and enjoy our present and to look forward to our future. Today we are here to celebrate the continuous and the dedicated efforts put in by each one of us to make India a successful hub in basic chemicals, in performance chemicals, in intermediates and finished dosage. So, ladies and gentlemen, we all know why we haven't gathered today over here. Okay, let me tell you. We have something very special in our hand with us to make a win-win situation for all of us. Okay, I would like to, before proceeding further, I would like to show one video. That the 21st century is going to be the Indian century. India will be the third largest economy soon. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. I love the fact that India is wrong. Right. JCM. कैसा लगा वीडियो आपकी तालियों से समझ में आ रहा है? Okay, this is very motivational video. By this we can come to know, as Modi ji said, India will be the third largest economic country very soon. So we will must propel Indian chemical industry, and Sudarshan Pharma and Global Chem are already working together on it. So let's join the hands to make our India economically strong. Now it's time to call all the dignitaries on the dais. Please welcome our guest of honor, Mr. Vasantrai Mehta, our father of Sudarshan Pharma, founder and director of Sudarshan Pharma. Give him a big round of applause. Now, please welcome our guest of honor, Mr. Hemal Mehta, founder and the chairman of Sudarshan Pharma. Mr. Hemal Mehta, with the experience of 26 years in the sourcing and supply of specialty chemicals, intermediates, APIs, and bulk drugs. Give him a big round of applause, guys. Okay, please welcome Mr. guest of honor, Mr. Sachin Mehta, founder and the Managing Director, so CFO of Sudarshan Pharma. Sachin Mehta plays a pivotal role in strategic sourcing and specialty chemical intermediates and basic solvent for SPIL. I would like to invite our respected Director of International Mr. Nilesh Thakkar. Is he here? Okay. Now, I would like to invite Mr. Sandeep Mehta, Director of Upstream Refineries, Breeze Chemicals and Gayatri Industries. Now, please welcome Mrs. Devangi Mehta, Sales Director of Sudarshan Pharma, who plays a vital role in sales progress. I am Namrata Mehta, again a Sales Director of Sudarshan Pharma, wife of Sachin Mehta. Now, please welcome Mrs. Preeti Muni, again the Sales Director of Sudarshan Pharma, and she is playing a very important role in sales progress. With these sales teams, we have achieved a wonderful sales target.
Now, please welcome our guest of honor, Dr. Vishwas Joshi, Vice President Technical and Catalyst for Manufacturing. Give him a big round of applause, guys. I would like to invite guest of honor, Mr. Bharat Patel, Director of Global Magazine. Please join us, sir. Okay, there are many prestigious personalities connected with us, like Dr. S. Venkat Rao, Dr. Lanka Rao Konda, Dr. Anil Kumar Singh, and Mr. Umesh Luthra. But unfortunately, they are unable to join us today. But we appreciate their support and commitment to our community. Whenever we start new venture or new work, we start with the prayer of Lord Ganesha. So we'll move to the forward to the Deep Pragatya. So everyone with me, Ganpati Bappa! Thank you. Please, all the guests, Deep Pragatya. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया हरता वार्ता विघ्नाची गुरुवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची कंठी धर्गे बाण मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मान कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मान कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्नखचित फरा भुजगौरी कुमरा चंदनाची उंची कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बारा सुरती नूपुरे चरणी गागर्या जय देव जय देव जय देव
मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव Everyone look here, please. Yeah, center camera, look here, everyone. Yeah, done. You also go. One more picture, please, guys. It's missing. I'll just come in. थोड़ा Yeah. Yeah. Why is थोड़ा अंदर आइए सर. हाँ बस. Hello. So, good afternoon, everyone. So, first of all, hello. Yeah. So, what a beautiful and a powerful way to begin our event today. A heartfelt thank you to Ms. Namrata Mehta. Big round of applause. So firstly, I would like to introduce Mr. Vicky Patel. Yeah. कहाँ पे हो सर? सुनिए ना, अगर वहाँ पे जाओगे ना जहाँ अपना कैमरे का बैग रखा हुआ है ना. Myself Vicky Patel, Director of Needs Information Services Limited. We are organizing a global camp show, The Gateway to Chemical and Pharma World. It's an international exhibition connecting chemical, pharma, dyes and process industries. We are providing a platform where it's a gathering of industrial things, where we provide a networking things. Thank you. थोड़ा जोर से बजाइए तालियां. Okay. So I am Vidhi and I'm absolutely delighted to be your host for today. Okay. So it is with great pleasure and immense respect that we now move to a very special moment in today's event. We are honored to have a distinguished guest, someone whose contribution and achievement have made impacting last at Sudarshan Pharma.
So to express our gratitude and appreciation for the presence of our honorable guest, I would request Ms. Shreya Mehta to facilitate Mr. Vasant Rai Mehta with bouquet of flowers. Mr. Shreya, Ms. Shreya. A big round of applause, guys. One picture. One photo. Thank you, Shreya. Thank you, Vasant sir. So now I would request Mr. Santosh Thakur to facilitate Mr. Hemal Mehta. Big round of applause. I think क्या भाई थोड़ा Now I would request Mr. Srinivas Patil to facilitate Mr. Sachin Mehta with beautiful flowers. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजनी चाहिए. Now I would request Ms. Srishti Mayakar to facilitate Preeti Muni. Now I myself request to facilitate Ms. Devangi Mehta with beautiful flowers. Now Ms. Ayushi would facilitate Ms. Namrata Mehta with beautiful flowers. I would request Mr. Manish to facilitate Dr. Joshi. Now, I would request Mr. Bhavesh sir to facilitate Mr. Sandeep Mehta. Okay, Sandeep sir is not available. Okay, easier. While entry.
on center, come on center, come on center. Now I would request Miss Sonal Bhatt to facilitate Mr. Bharat Patel. Okay. Okay. I would request Mr. Vicky Patel to come on stage. Vicky, sir. Come on center, come on center. Look here. Okay. So thank you once again to everyone for being here today for valuable contribution at Sudarshan Pharma. So now moving forward, I will like to take a moment to introduce Sudarshan Pharma Industries Limited, a company that has been at forefront excellence and innovation in pharmaceutical industry. So, PPT, I'll just share the All okay. Okay, let's start. Sorry guys for keeping you waiting. Okay, yeah. So I'll share you about Sudarshan Pharma, what Sudarshan Pharma is about us. So our originally incorporated at Sudarshan Specialty Chemsol Private Limited in 2008 in Mumbai. Our company was subsequently named Sudarshan Pharma Industries Private Limited. In 2016, the company was listed as a public limited company and became Sudarshan Pharma Industries Limited, SPIL, the biggest movement. The company's promoter, Mr. Hemal Mehta and Sachin Mehta, have a combined experience of 25 years in specialty chemicals, bulk drug and pharmaceutical industry. Their passion for building an integrated chemical and pharmaceutical company has been the pillar of our company's growth and drives a strong value system to Sudarshan. So, Sudarshan Pharma Industries Limited is renowned manufacturer and supplier of active pharmaceutical ingredients, API, that are used in production of various pharmaceutical products. With this, Sudarshan Pharma have a strong presence across Pan-India, Middle East, Southeast Asia, Pacific and other parts of our world. Sudarshan Pharma Industries has emerged a leading player in a chemical industry.
Now, I would like to introduce and invite the founder and the director of the Sudarshan Pharma, Mr. Vasant Rai Mehta. With his visionary leadership and strategic foresight, SPI has instrumental in establishing and shaping the company. So I would request Mr. Vasant sir to tell us about Sudarshan Pharma. Good afternoon, everyone. Myself, Vasant Rai Ratilal Mehta, of my father of my brilliant son, Mr. Hemal Mehta and Sachin Mehta, Chairman and Managing Director of Sudarshan Pharma Industries Limited. It is an honor to be here today. First, I want to thank Lord Krishna, Lord Krishna and all our parent partners, customers and team for the support. Without you, we would not be where we are now. We started this company with a simple goal to help and connect with people. We believe in making good products that are safe and effective every day. We work hard to improve, learn and create better solutions for the welfare of the society we live in. We have big dreams. We want to grow and reach more people, now just in our country, but around the globe. We are committed to bringing better health to everyone. Thank you all for believing in us. We will continue the work with more patience and more dedication. Thank you to all. Jai Shri Krishna. Guys, thank you so much. I would like to introduce the main pillar of Sudarshan Pharma, Mr. Hemal Mehta, a chairman and managing director who brings 26 years of extensive experience in pharmaceutical and chemical industry. He is recognized for his expertise in innovation and technology, driving a development of advanced products aiming at addressing incurable disease. So, today, Mr. Hemal Mehta will share his valuable insight on the current landscape of the chemical and pharmaceutical industry as well as perspective of evolving future. So, further, let's welcome Mr. Hemal Vasant Rai Mehta. Big round of applause, guys. गुड आफ्टरनून ऑल। देखो यहाँ पे हम लोग जो जोश से मिले हुए हैं और जो सेमिनार का पर्पस है 2025 एंड अहेड, मतलब यहाँ से हमको आगे कैसे जाना है, केमिकल मार्केट में कैसे आगे बढ़ना है, एपीआई में कहाँ पे जाना है, इंटरमीडिएट्स में क्या करना है, टेक्नोलॉजी में क्या करना है, जिसके लिए आप लोग सब आए हो यहाँ पे। अपना बेनिफिट क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे जो ग्लोबल इंक्वायरी मैगजीन ने हमको ये अचीवमेंट दिया है, कैम एक्सपो, ग्लोबल कैम एक्सपो के थ्रू हमको जो ये सेमिनार मिला हुआ है, इस सेमिनार में हम क्या करना चाहते हैं, जैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी होने के कारण हम लोग यहाँ से फ्यूचर में 2025 एंड अहेड कैसे आगे बढ़ सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड्स क्या है। एक्चुअली क्या है, मार्केट चलता है ट्रेंड्स के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो एंटरप्रेनर है और नए जो बिजनेसमैन हैं उनको कैसे पता चले कि आगे का ट्रेंड क्या है, आगे के डेवलपमेंट्स क्या हैं, आगे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोल रही है। तो ये सब के लिए ये सेमिनार किया गया है और आज 26 साल का एक्सपीरियंस मेरा है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, केमिकल बाजार और वडगादी से लेके फार्मा फिनिश फॉर्मुलेशन तक जो हमारी डेवलपमेंट चल रही है। तो यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे, जैसे हमने स्पेशलिटी केमिकल से स्टार्ट किया था,
स्पेशलिटी केमिकल से इंटरमीडिएट्स, एपीआई, फिनिश फॉर्मुलेशन एंड ब्रांडिंग. So we are into the segment to upward integration of pharma industries. So we are giving the best and quality products as well. It is affordable. So ये जो डेस्क है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, उस डेस्क से जो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास जो इंटरनेशनली जो हमने विजिट किया हुआ है, इंटरनेशनली सबसे डिस्कस किया है, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा. सो फर्स्ट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स के बारे में. जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम इन इंडिया है. अभी अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर हमको जो कंपनी को आगे बढ़ाना है और इंडिया को अगर हमसे बूस्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे. तो आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, जिसमें प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम और आत्मनिर्भर भारत के की इंटरमीडिएट्स, ड्रग्स एंड एपीआई शामिल हैं, जिसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया. 2021 से ये स्कीम आई थी, अभी सब ऑन बोर्ड होने लगा है. तो 80% डिपेंडेंसी जो चाइनीज मार्केट की थी वो अभी निकल जाएगी, धीरे धीरे होके वो 50% तक आ जाएगी. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मतलब इंडिया और इंडिया को प्राउड करने के लिए अपनी गवर्नमेंट जो एफर्ट लेती है उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू मोदी जी एंड जेपी नड्डा जी, हेल्थ मिनिस्टर एंड ऑल पार्लियामेंट मेंबर टू गिवन सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म इन इंडिया. तो जो अभी मैं बात करूंगा स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में, तो स्पेशलिटी केमिकल आगे चल के कैसा होने वाला है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या बूस्ट आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा. स्पेशलिटी केमिकल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो अभी नीश है. जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम देखेंगे कि जो स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन के जो केमिकल्स रहते हैं वो यहाँ की कंपनी सॉन्गवॉन्ग स्पेशलिटी बनाती है, जो पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में मास्टर्स है. और इंडिया में 1 से 2 कंपनियाँ ये इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स बना रही हैं. तो आप फ्यूचर देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स के जो वर्टिकल्स हैं, जैसे कोई स्पेशलाइजेशन होगा, जैसे specialization in electronic segment, specialization in agrochemicals, specialization in pharmaceuticals, and advanced intermediates in chemicals, pharma and agrochemicals. So chemicals और intermediates का जो future होने वाला है, उस new technology आएगी, new developments आएंगे. जैसे कि समझो कि फ्लो रिएक्टर्स आ गए, जैसे आपको सचिन भाई यहाँ पे आपको बताएंगे फ्लो रिएक्टर्स में कैसे डेवलप्स होता है और कैसे. मैं आपको डीप स्टडी नहीं बताऊंगा, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है वर्टिकल में से हॉरिजॉन्टल होने वाले हैं, जो हम लोग वेपर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी का ज़माना रहेगा, न्यू कुछ वर्जन आना है. जैसे हमको बेनिफिट कैसे रहेगा, समझो कॉमन पर्सन फ्यूचर का इंडिकेशन करके कैसे बेनिफिट करता है, तो उसको कोई भी एक मॉलिक्यूल के ऊपर, एक स्पेशलिटी के ऊपर और इंटरमीडिएट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. उसकी प्रोडक्शन और R&D करके, रिसर्च डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट की प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी पैटेंट फाइल करनी पड़ेगी. और पैटेंट फाइल करके वो जब मार्केट में जाएगा तब उसको मोनोपोली मिलेगा, मिनिमम 30 to 40% का मार्जिन मिलेगा और मार्केट में हम लोग सस्टेन हो पाएंगे. जैसे आप लोगों ने देखा 2024 वीक रहा है, जैसे डिमांड्स कम हो गई है, बायर से रिक्वायरमेंट्स कम आ रही है, मार्जिन कम हो गए हैं, चाइना वाले भाव डिक्रीज कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो मैनी चैलेंजेस आर देयर. तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना है, कंटिन्यूस प्रोसेस डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, यील्ड के ऊपर वर्क करना है, प्रोसेस कैसे साउंड हो, कितना इजी और उसको इफेक्टिव इकोनॉमिक किया जाए, उसके ऊपर हमको वर्क करना है, तो हम सस्टेनेबल रह पाएंगे. तो स्पेशलिटी केमिकल्स में मुझे ये बोलना था. अभी हम आते हैं उसके एक स्टेप आगे, जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के बाद आता है एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट. ये बड़ा नीश मार्केट है और नए नए मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, नई नई पैटर्न्स ब्रेक होती जाती है, न्यू पैटर्न फाइल होती जाती है. तो उसमें कैसे आगे बढ़े, समझो कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जेमसिटाबिन चालू किया हमने. जब लास्ट ईयर स्टार्ट किया तो उसका 1,46,000 रेट था. मतलब 1,46,000 के हिसाब से हमारी कॉस्टिंग आ रही थी 96,000 से 1 लाख की कॉस्ट आ रही थी. तो हमको बहुत ही अच्छा 40% का मार्जिन मिल रहा था. तो हमने एक कंपनी खरीद लिया, रत्ना लाइफ साइंस लिमिटेड. और जब भी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कैपेसिटी बढ़ाई, आज पता चला
1,10,000 में बिक रहा है, 1,05,000 में बिक रहा है, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? तो हमने क्या किया, 1 साल में उसमें दूसरी प्रोडक्ट से जनरेट की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डॉक्टर गोगरे जी ने हमको हेल्प किया। हमने दूसरे प्रोडक्ट्स नीप्स बनाए, दूसरे टेनिप्स बनाए, कैप्सिटाबिन बनाया, विंकासिड बनाया। तो हमने नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए, तो हम सस्टेन हो पाए। और आपको मैं गुड न्यूज़ देता हूँ, रत्ना लाइफ साइंस हमने 1 साल से लिया है, 3 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, हमने 1 ही साल में उसको प्रॉफिटेबल कर दिया। और फर्स्ट क्वार्टर में हमने 90 लाख का पैट वहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये लेवल पे हमने कंपनी को ले गए। तो मैं ये चाहता हूँ डियर, आप लोग मेरे अपने हो और एंटरप्रेनर हो, आपको कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम आए, हमारे अंडर में 38 डॉक्टरेट पीपल जुड़े हुए हैं। एडवाइजर है जैसे डॉक्टर जोशी जी है, हमसे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए जुड़ गए, मतलब एज ए फैमिली मेंबर। तो आपको कुछ भी गाइड चाहिए, आप hemal@sudarshanpharma.com पे डालो, हमारे यहाँ से डॉक्टरेट पीपल का आपको रिप्लाई आएगा, आपको फ्री ऑफ चार्ज। और कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, डेवलपमेंट्स चाहिए, टेक्निकल एडवाइस चाहिए, कुछ जॉब वर्क करना है, हमारे 5 प्लांट्स हैं, उसमें हम लोग जॉब वर्क करके आपको दे सकते हैं। कुछ एक्सपोर्ट्स के लिए रुका है तो हम लोग टाइप कर सकते हैं। लास्ट टाइम मेरा यही प्लेटफॉर्म पे टुगेदर एवरीवन अचीव मोर ये सेमिनार था, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो मैं एपीआई के बारे में अभी जो बता रहा था, तो एपीआई में फ्यूचर क्या होने वाला है, तो जो सेगमेंट्स देखेंगे तो फ्यूचर में नए नए मॉलिक्यूल्स आएंगे। जैसे एक सीटाग्लिप्टिन, एक नाम बोलूँ मैं आपको, तो सीटाग्लिप्टिन 2026 में उसका पेटेंट कंप्लीट होने वाला है। तो आज से हमने प्रिपेयर किया है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू है, उसके प्रोडक्ट्स बन गए हैं, सैंपल बन गया है, और अभी जैसे ही 2026 में वो पेटेंट से बाहर होगा, हम लोग उसको लैंड करेंगे। तो उसी प्रकार से आप लोग पेटेंट्स पे ध्यान रखो, पेटेंट्स फाइलिंग करने में ध्यान रखो। और जैसे आपको मैं बताया कि क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, कंटिन्यूस प्रोसेस करो, यील्ड कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, सेम जो स्पेशलिटी केमिकल में हमने किया उसी तरह से हम लोग एपीआई में करेंगे, राइट। अभी मैं आपको बताऊं कि जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स है, उसमें अगर समझो कि कॉमन पीपल जो छोटा इंटरमीडिएट्स बनाता है, उसको अगर आगे बढ़ना है तो कैसे करें। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो डीएफटीए बना रहा है, बराबर है, इट्स फ्लुकोनाजोल का इंटरमीडिएट्स है। तो डीएफटीए की मार्केट वो कितनी कर पाएंगे, तो सामने उनको इतने स्ट्रगल्स आते हैं, कभी पैसा फंस जाता है, कभी माल बराबर नहीं होता है, कभी ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप सामने कोलैबोरेट करोगे, हम फ्लुकोनाजोल बनाते हैं, आप डीएफटीए हमको दे सकते हो, और हम लोग फ्लुकोनाजोल मार्केट में हमारे पास बहुत अच्छा डिमांड है, एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग ग्रेजुअली एक दूसरे से साथ में मिलके एपीआई में डेवलप कर सकते हैं। अभी मैं आपको इंटरनेशनल डेटा की बात करूँ और इंटरनेशनल फैक्ट्स की बात करूँ, जैसे हमारे अरविंदो है, वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड इंडिया इतना प्राउडेड मोमेंट सेलिब्रेट कर रहा है। उसी तरह से फॉर्मुलेशन के लिए भले पूरा केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स चाइना से आ रहा हो, मगर फिनिश फॉर्मुलेशन में इंडिया का जवाब नहीं है। इंडिया में इतना पूरे मतलब एक हम लोग मेक इन इंडिया के फंक्शन में थे, दिलीप भाई संघवी जो सन फार्मा के, उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया था कि इन द वर्ल्ड 8 पीपल हैव, मतलब इन द 8 पीपल 1 पीपल शुड ईट द मेडिसिन ऑफ इंडिया। सो इतना हम लोग वर्ल्ड वाइड मेडिसिन एक्सपोर्ट्स करते हैं, दैट इज फॉर्मुलेशन। तो हम लोग फॉर्मुलेशन में भी ये लेवल पे आगे आए हैं। तो मेरा ये डेस्क से फर्स्ट था स्पेशलिटी केमिकल्स में हम कैसे आगे बढ़े, सेकंड था हमारा एपीआई में कैसे आगे बढ़े और जॉइंट वेंचर कैसे करें, थर्ड मेरा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। देखो कॉमन पीपल, अगर मैं किसी को पूछूंगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो बोलेगा वो साइंटिस्ट काम करता है और ये रहता है, मगर ये रिसर्च बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब 500 to 600 करोड़ रुपीस जाके वो लैब तैयार होती है। जैसे फाइजर के पास, सन फार्मा के पास, स्ट्राइड्स के पास, अपने बायोकॉन के पास, सिंजेन के पास, ये सब लैब्स रहती है। हमारे कॉमन पर्सन के पास मैक्सिमम क्या रहेगा, एनालिटिकल लैब रहेगी, केमिकल लैब रहेगी, फिजिकल लैब रहेगी, माइक्रो लैब रहेगी, राइट। तो उसमें जो रिसर्च करना है उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटियाँ दी है, जैसे अपनी यूडीसीटी है बॉम्बे में, जैसे पूना में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है,
जैसे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करवा सकते हो और उन्होंने डेवलप किए हुए प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मैं मेरी कंपनी का यहाँ पे हमारी कंपनी का एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग पब्लिक लिस्टेड कंपनी है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमको कहाँ पे दिक्कत आई थी, एज ए प्रोप्राइटर बेस से हम कहाँ पे पहुँचे और वो कैसे पहुँचे। समझो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना था, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, तो कैसे करूँ। तो हमने क्या किया, अमेठी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विलियम सिल्वा मूर्ति को मिले, उनको बताया कि सर हमको रिसर्च करना है, ये करना है। तो हमारे डॉक्टर अनिल वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने इतना बड़ा उनको सामने सामने अचीवमेंट दिया, तो वहाँ पे हमारा वाइल्ड एंट्री हो गया। तो वहाँ की लेबोरेटरी जो 550 करोड़ की लेबोरेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाई हुई है अमेठी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमको वाइल्ड एंट्री मिली और हमारे 3 प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। ये प्राउडेड मोमेंट है हमारे लिए, इतना प्राउडेड मोमेंट है कि जो कॉमन पब्लिक अचीव नहीं कर सकता है। आप मेरा अभी एक मैगजीन है इकोनॉमिक्स एंड टाइम्स, उसमें मेरा न्यूज़ आया हुआ है, तो उसमें आप रीड कर सकते हो। उसमें ब्रीफ लिखा हुआ है कि हमने अमेठी यूनिवर्सिटी के लिए साथ में कैसे हमने काम किया हुआ है। दूसरा है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में अभी हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर हुआ है, बिकॉज हमने उसके 2 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो हमने पेटेंट फाइल किए हैं। अभी हमारा विटामिन B1 एंड B6 में जो हमने PLI से प्रोजेक्ट्स लिया था, तो हमारे साइंटिस्ट ने हार्डवर्क करके 14 मंथ के टफ टाइम सिलेक्ट करके उसमें इंटरमीडिएट्स भी हमने खुद बना लिए हैं। मतलब हमारे लिए प्राउडेड मोमेंट ये है कि इंटरमीडिएट्स हमको चाइना से नहीं लाने हैं, हमारी कंट्री में ही बनेंगे। तो हम लोग इंटरमीडिएट्स बनाएंगे, उसका पेटेंट फाइल किया, API बनाएंगे, उसका पेटेंट फाइल किया। तो आज हम लोग छोटी कंपनी से MSME से SME बोर्ड पे आए, SME बोर्ड पे आज हम लोग पेटेंट फाइल कर रहे हैं। तो वी आर द प्राउडेड कंपनी दैट हैव द 2 API in our basket with the intermediate and the patent is filed, already filed। तो इसी प्रकार आप लोग भी आगे आ सकते हो, उसमें भी पेटेंट फाइलिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए, हमारे डॉक्टर सर हैं, हमारे जो पेटेंट के मास्टर डॉक्टर सर हैं, वो आपको गाइड करेंगे और हम लोग यहाँ से बड़ा लेवल पे आगे आ सकते हैं। तो मैंने 3 सेशन आपको कंप्लीट किया, स्पेशलिटी केमिकल्स का, API का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अभी आता है कोलैबोरेशन। अभी समझो कि इंटरनेशनल मार्केट में कोलैबोरेशन कैसे होता है। हम लोग सुनते हैं कि भाई हंट्समैन को इसने ले लिया, इसका कोलैबोरेशन हो गया, सन फार्मा ने को ले लिया। तो बड़े कोलैबोरेशन कैसे होते हैं और छोटे कोलैबोरेशन कैसे है, तो ब्रांडिंग कैसे चलता है, राइट। तो जो इंटरनेशनल मर्जर्स एंड एक्विजिशन बोलते हैं, जैसे सैंडोज कंपनी अभी सामने सामने मर्ज हो गई, जैसे तीवा का मर्जिंग अभी हुआ, उसी प्रकार से छोटा छोटा मर्जिंग हम भी कर सकते हैं, छोटे लेवल से कर सकते हैं। ऐसे आप लोग इंटरप्रेटर हो, आप आपके जो कोऑर्डिनेटर लोग रहते हैं, कॉम्पिटिटर लोग रहते हैं, उसको गले मिलो, सामने सामने बात करो, कहाँ पे को ब्रांडिंग हो सकता है, को कोलैबोरेशन हो सकता है, कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हो। जैसे मैं सुदर्शन फार्मा से डेस्क से आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर में हमने टोटल 3 कंपनियों का एक्विजिशन किया। जैसे फर्स्ट बता चुका हूँ, रत्ना लाइफ साइंस, वी आर द प्राउडेड 11th company in the India to manufacturing oncology API and intermediates. The second company we acquired Ishwariya Healthcare. In Ishwariya Healthcare is a co-branding. We are supplying to government our pharma products, and he have the manufacturing of cannula and surgical instrument and sutures. So we acquired that company with a small amount of 5 crore rupees, and we are coming here. Like that, we acquired the Sudarshan Pharma Life Science. And in Sudarshan Pharma Maven, it's a research-based company. So these 3 companies we acquired, and in future, Sudarshan Pharma have the plan to come up with the accreditation. Now in our the MHRA approval, PICS approval, it is very important for the exports as well as to the Indian. You have the price and good margin with the USFDA plant. So the exports is also the very much interesting for the USFDA plant. So Sudarshan Pharma Industries Limited in the future going to acquire one USFDA and API. That is our new. So you are looking here vision of 2035. मतलब हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 2035 तक क्या होने वाला है, कैसे कंपनी को सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फॉर्च्यून 500 तक लेके जाए।
उसी प्रकार आप लोग अपनी कंपनी को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे उसका रिजल्ट ला सकते हो, कैसे यील्ड बढ़ा सकते हो, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। इंटरेक्शन सेक्शन अभी मेरे लेक्चर्स के बाद भी होगा। कभी भी किसी को भी कोई भी ये आता है, क्वेश्चन आता है, आप लास्ट में हमें पूछ सकते हो और मुझे मेल भी कर सकते हो hemal@sudarshanpharma.com। तो यहाँ पे मैं मेरी स्पीच को कंक्लूड करता हूँ कि मैंने आपको क्या प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। मतलब स्पीच ऐसे है, स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एपीआई, रिसर्च और आप डेवलपमेंट में कहीं भी आपको सुदर्शन फार्मा का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं भी आपको एक्शन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कुछ साथ में मिलके कोलैबोरेशन करके करना है, आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, वो ब्राइट कब रहेगा? जब हम प्रेजेंट ब्राइट करेंगे। और प्रेजेंट ब्राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कंपनी के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कंपनी की एलिजिबिलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, R&D के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तभी हम लोग कोई स्ट्रेंथ पर पहुंचेंगे और टॉप 10 कंपनी में अपना नाम आएगा। तो सुदर्शन फार्मा going to ahead a top 10 company soon. Thank you very much. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। So, thank you so much, Mr. Hemal Mehta, for sharing all the segments of Sudarshan Pharma, market knowledge and future plans. So, now to continue our discussion, we have another esteemed leader with us today. I am pleased to invite the Joint Managing Director, Mr. Sachin Mehta, who excels in sourcing specialty chemicals, leading research and taking development initiatives, developing import substitutes and driving business excellence. So, big round of applause for Mr. Sachin Mehta. Thank you so much, Vidhi ma'am. Everyone. I am excited and here to interact with you all on behalf of Sudarshan Pharma Industries. I, Sachin Mehta, would like to thank Bharat Bhai and Vicky Bhai of Global Inquiry Magazine for giving us this wonderful platform. I would like to thank all the members on the dais, Shri Vasantrai Mehta, our mentor, Shri Hemal Vasantrai Mehta, our chairman, Shri Nilesh Bhai Thakkar will be joining soon, our global director, Shri Sandeep Bhai Mehta, our growth partner, all the sales directors over here. I really thank you all from bottom of my heart. I am here with an impactful topic of win-win partnership in export, manufacturing and new technology. So here, can we have next slide please? So about us, like without vision, everyone has said there is nothing. So our vision and mission is to reach Fortune 500. But here there is a change that in this Fortune 500, our vision has changed with a Fortune 500 vision with win-win situation for all of us. So we are here with a partnership for all of you. So ladies and gentlemen, I am honored to present to you export statistics of India specialty chemicals, intermediates, pharma, API and formulations. So here are some of the statistics that are from Indian Trade Portal. So India is standing at approximate 27.82 billion in 2024 for the market of pharmaceuticals. The chemical and petrochemical market is US $178 billion. So which is really impressive, and currently the intermediate and chemical market which is going to 300 billion by 2025. The same ranges are there for formulations in which there are new technologies which are coming onto the peptides and biosimilars. This just to give a glimpse about our few products and which we can collaborate together on this wonderful event to make a win-win situation. We have few inorganic salts in which we are master. We have few specialty chemicals which we have developed through flow technology. And there are few molecules on which we are working together.
These are our own manufacturing upcoming products in which we have done a great cost cutting, which brother had already explained in his wonderful speech, that how we are innovating, how we are taking help of all the invested R&D units which are really not accessible to the common public. Just this is a glimpse about our products, and we are glad to say that with our all team effort, since last 3 years we are selling our herbal cough syrups to Malaysia market. Although it is a PICS approved location, but we have approved our nutraceutical products over there. These are the few segments of oncology which brother explained, like along with gemcitabine we had also developed this product and in a cost effective way. So we have developed this through our R&D and continuous efforts. Right now, it is just a win-win situation for all of us for the global market. Now, as you can see, like each and every country has their different verticals. Like if you want to sell any finished dosage in Nepal, it is next to impossible because there the registration costs are very high. Either it is an agro formulation or either it is a finished formulation for pharmaceuticals. So here we have approaching Nepal with another way, that we have our depot over there and we sell a lot of API over there. Same with Pakistan, no doubt it is like country in which there is always a controversy, but definitely for medicines there is no controversy. Along with that, Sri Lanka, Bangladesh, so this all locations with our team and effort, we have our network present over there. So we are glad to announce that we have our global footprints on a very strong way. With a win-win situation, we are working with all the locations separately. Like if you say, for example, we have started our office in Dubai. In Dubai, we are there before COVID. And recently, we have started office in Kenya. We have a warehouse in Kenya. Recently, we have started Singapore office, USA, then UK, and Canada and Poland. We have started our branches and office. So everyone who are here, we can make a win-win situation for all of them. The platform is ready to fly right now. And so the molecules which we will develop together, we can launch on these countries where there are a lot of barriers which are there, but we have broken all the barriers and now we are ready to expand in these all regions. So these are few, now exports, as you understand, we have a very good strength and we can launch your products. Either we have started new patents we have for bioplastics also. So we have launched this all products out of India. And as I told, these countries, we are really strong. Coming on to the manufacturing segment, the main motto is Atmanirbhar Bharat. So with this Atmanirbhar Bharat, we are focusing on import substitutes and we are collaborating with a lot of companies in India. We can say that every month we are doing 4 to 5 collaborations, and with 100% implementation with the efforts of our team, with the efforts of our doctors. So we like to join you all for this all reactions. We are having the capability, we are finding a lot of units where we can do job work, or even if you can do at our locations job work also. So as you can see, we have bromination, chlorination, halogenations, we have intermediates, we have API, as well as we are into formulation. Just a glimpse about our manufacturing unit that we have. So this is one of the unit where we do bromination. It is 3,420 square feet. It is readily available, and we can do job work for your products as well as we can make some synergy if you have the technologies ready. This is just the product of the unit. What are products that we have lined up? This is the second unit. These are the key capabilities that we have. This is just a glimpse to know that what we handle, how we handle, because each and every products we work with, the first is safety, the second is environment, both goes hand in hand. That are our top priority. This is the infrastructure of our intermediate unit. So these are the few molecules that we had already developed in the cost-cutting formula, which brother has explained very nicely. This is the API unit, which is a very massive unit, which we have done the tie-up. These are the few products, just a glimpse of it.
So in a nutshell, we have bromination, we have hydrogenation, chlorination, crystallizations, then we have diazotizations, condensation, nitration, then we have, I would like to add few products like we have oligonucleotides as well as we have fermentation process for peptides in which we have 5 gram to 25 grams reactors that are ready for peptides for the scale up. Now coming on to the wonderful topic that is flow reactor. See, China or you name any country, they are right now working, they are moving ahead than us, and we have to move away from the traditional method and we have to find some high-tech solutions for each and every industry. This is just a glimpse about our flow reactor that we have developed at our lab, and we have total right now 14 reactors which are ready to shift at any of your locations. If you have any R&D unit, you want to scale up something, we can send this flow reactors over there and we can share our ideas and we can do the cost cutting. I will explain what are the facts about these flow reactors. There are different kinds of flow reactors, as you can see that what are the benefits that we can get from it. It is self-control, it is operational performance, it is having a really effective in the process flow timing. Okay, what is the need for the flow reactor? So basic need is the chemical process. If there is mass transfer, heat transfer, which are highly exothermic reactions that we can handle in our lab with this wonderful technology. So this is the number one. The thing is safety, which I told, as well as the environment safety as well as human safety. Both are there. We can control the effluent on a really nice way. These are the few innovative technologies that we have done and by which we have done, we have implemented this technology on Win-Win platform and we are glad to introduce it on this platform. So here you can do scale up, you can do, this is plug and flow. So here there are, like I can share the slides those who need. So this is scale up validation. This makes it very easy. So here the normal reactions that happens on the flow reactor that happens with 1 ml, 10 ml, even the biggest production in which we can do 30 tons or 50 tons with a flow reactor of 5 liters or even 10 liters. So here are few of the glass line reactors that we have displayed that we have ready at our lab. So this is a channel shape. It is just a glimpse about the flow reactor. And this is a glass line. It is majority used for all hazardous products like say thionyl chloride or any chlorination or any exothermic reactions that can be handled over here, and it can be scaled up very easily. These are the few other flow reactors in which they are easily and flexible, accessible. It is really effective and affordable. Normally there were 14 vendors. If you want all the list, we can share. For all these flow reactors, out of which we have implemented few and we are again improving ourselves. This is just a glimpse about it. For example, here it is not visible, but I will explain. Normally in the batch reaction time, it is like the timing is 60 minutes, whereas in flow reactor you can do it for 15 minutes. So that is the changes which is there. Like for example, batch reaction, the temperature might be needed is minus 10 degree, but in flow reactor you can do at room temperature also. The conversion ratio, for example, the batch is 98%, but we can do it by this process even 100% also. But again, sometimes distillations are needed. It also gives a cost-effective utility benefits. So in this you can handle hydrogen peroxide. It is very safe in flow reactor because the reactions that it happens in gram level, so it can be easily manageable. Even the sulfonation or oleum reaction can be handled very easily. Bromination, chlorination, that also can be handled very easily. Even cyanations are there. There are few people, we have signed the NDA, big companies, they are doing cyanation by our flow reactor. So here few benefits again are there. It is fully automatic on a later scale. So this is again few of the photographs of our flow reactor that we had implemented at our lab. So thank you so much for this giving a good timing for all of you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Sachin Mehta.
for sharing your perspective on the next steps for industry and companies' growth. Thank you. Now, we are about to hear from another distinguished expert who will provide us with forward-looking perspective on future of chemical and pharmaceutical. So, please join me in welcoming Dr. Vishwas Joshi, sir, the Vice President Technical at Sudarshan Pharma, who is known for his innovation, technical expertise and strategic leadership. His contribution has been instrumental in advancing the company's technical capability and driving its success in the industry. So, please welcome with a big round of applause. Good afternoon, Honorable Chairman Hemant Mehta, Managing Director Shri Sachinji Mehta, and all dignitaries on the dais. And good afternoon to everyone present here. So I am going to talk on what Sudarshan Pharma is going to do in 25-26. So when we look ahead, we have to see that what we have done from the same dais last year. We assured you that we will be doing certain takeovers, we will be increasing our basket of products in API and in intermediate division, and so we did it. Last year's basket, if you really look at, we had a few products as the APIs and intermediate, and we were struggling really to increase that number of products, that is our basket. I'm very thankful to our Managing Director. He has some intuition of what to pick from the market. For example, the last slide he showed is the flow reactors. I mean, I was giving very passive response to him for last 2 years on these flow reactors. But yes, flow reactors are useful in conducting certain hazardous reactions like nitration. I tell you, in batch process, in nitration what happens, that there is a formation of the nitronium ion. And if all of a sudden, suppose electricity goes and stirrer stops. And then after 10 minutes, suppose there is electricity again, and the stirrer starts moving. In between that 10 minutes, the quantum of nitronium ion generated are much more. And if it is not controlled properly, then there is an explosion. So that is generally problem in the nitration reaction. This is the one example I have given you of the flow reactor safety. So flow reactor takes care of all these kind of things. So coming to what we have done in last year is we have increased our basket. I think we have more than 10 APIs like proconazole, acyclovir and progabalin, these kind of more than 10 products API. We are manufacturing at our associate and joint venture sites. We have more than 17 intermediates which are required for API. Those are being again manufactured at various sites all over India. See, that is what we have done in last, I would say, 1 year. From the same dais, we had assured you that we will do this. But then what next? As rightly said by the chairman, we need lot of innovation and lot of new ideas to come. But where from the new ideas will come? So intelligently, management has taken some decision, and we have joined hands with certain CROs, that is contract research organizations. I would name few of them, that is Dr. Lankarao, that is Ardai's lab, Dr. Purushottam, that is KK Laboratory Vijayawada, and so similar, there are a couple of CROs. Just now there was a Dr. Arvind also here. So these are the CROs we are taking benefit of, as these are the doctors which are helping us in bringing new technology and commercializing this. So that is what basically we have done in last 1 year. But then how we have to go ahead? When we have to go ahead, we already have done intermediates in synthetic. We already have done few APIs. We assure you that we will increase
our basket of product, but then what next? This question mark is very, very important. The question mark gives you always the answer that what I have to do next. I will request the chairman of Sudarshan Pharma. There is a new division which has already established in market, that is a digital pharma. What is digital pharma? I will give you an example. The example is to reduce my own obesity. I wanted to monitor my own glucose, that after taking my lunch, what is my glucose? After my breakfast, what is my glucose and how much I should eat, how much I should not eat. Now these online glucometers are not manufactured in India. I would request Himalji to take up these digital pharma products because the cost of manufacturing is very, very less. I tell you, this is one example, that is I was using Abbott Labs online digital meter. What is this digital glucometer? This is a simple semiconductor wafer is there, which is placed here with certain decorum, and then it has got the internet connection with my mobile, and on my mobile there is an app which shows me graphically that after my lunch or after my dinner how my glucose has gone to 160 and how I have to eat less of carbohydrates. I think upward Sudarshan Pharma has already traveled from doing formulations, intermediates, APIs. Time has come to venture into new greener pastures. What are these new greener pastures? Is digital pharma. I will request and force him, please appoint few of the team members and start venturing into digital pharma. For example, few of our friends, they are working on like company Meditronics. They are working on the pacemaker. Now the pacemaker, how many distributors are there, how many manufacturers are there in India? So why not Sudarshan Pharma can try these waters which are not tested? Yes, in last couple of days, we have done tie-up with Ardez Lab. The first felicitation you must have seen of the senior most Mr. Mehta ji, and was felicitated by Shreya Mehta. So why to take name of Shreya Mehta? See, this question mark gives answer to Mr. Hemal Mehta. He has achieved something into intermediates and APIs in the rock nest. So polypeptide is the pharma of tomorrow. Polypeptide is the pharma of tomorrow, and the third generation of Mehta is already into the United States studying the biotechnology. So I will request her to study semaglutide, loraglutide, which we are doing with one of the Hyderabad-based US certified company, that is Dr. Lanka Rao's company. And I will request to take up this technical of loraglutide and semaglutide and do the formulation in our Tarapur unit or our HP unit. See, one tablet of semaglutide costs 1,300, one single tablet. One treatment of one single patient takes 10,000 rupees. So this is a question that is Sudarshan Pharma, they're sitting to do the exploitation? No. Sudarshan Pharma is venturing into the high value products and making it available at cheaper rate to the Indian society. That is whole objective. So we are already there, and we have done tie-up with Ardez Lab for the semaglutide and loraglutide, and I will request and force Managing Director and Chairman to take up the formulation of these two products, and there are a couple of products I think we discussed in our meeting. So digital pharma, we are already into onco, so please increase the list of onco, and I assure on behalf of Sudarshan Pharma that we can do anything from ash to nuclear. So we are very strong marketing wise, we are very strong technically, and Sudarshan Pharma is
will be helping India to grow in pharma. Thank you very much. So, thank you so much, Dr. Joshi, for your enlightening thoughts. Thank you. So, as we conclude today's event, it's my pleasure to deliver the closing statement. Thank you so much for gathering together for this wonderful evening. And Sudarshan team, let's rock it and come for the national anthem of Sudarshan Pharma. Please join. Thank you, everyone. Please be seated. Please be seated. Sudarshan team, you can join. Can we play Sudarshan anthem? यशवंत सर आप भी आ जाइए। आ जाओ। Thank you so much, everyone. Thank you. See you soon, guys. The next year in middle also.
यही को करेगा मुझे बोला था थोड़ा वो आप लोग जो पीछे आगे और 2-3 दिन यहाँ पे सीट हो जाओ प्रॉपरली सब लोग सीखेंगे आपके आ जाओ ना हाँ आपके आता है अरे आप 2 जन तो आगे आ जाओ यहाँ बैठने दे रहे हो एक दिन यहाँ बैठ जाओ आगे आ जाओ आप सिर्फ फेस दिखेगा सर बैठो सर वो बोर्ड भी ये पीछे भाई ये हट रहा है क्या भाई क्या कर रहा है तू क्या कम हेड आप लोग थोड़ा पीछे आगे आ जाओ हाँ थोड़ा मतलब बहुत डिस्टेंस हो रहा है थोड़ा आगे आ जाओ क्या स्टे मैन स्टे परफेक्ट बेटा आगे आ जाओ थोड़ा स्प्रेड होके हाँ उसको मत छोटी है थोड़ा या परफेक्ट या एवरीवन लुक हियर माय कैमरा हियर perfect yeah one more yeah ready yeah everyone cheese smile look at each other with motion yeah next yes next make some noise guys make some noise everyone make some noise yeah done guys done yeah one more one for video make some noise one more 1 2 3 yeah 1 2 3 make some noise ये वीडियो के लिए आना ही चाहिए वॉइस की जय हो गया कौन चाहिए अभी